lecture. We're gonna start with a new chapter called Thinking for CBSE Class 11 Psychology. ठीक है, हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे Thinking. So let's start with this chapter Thinking. तो थिंकिंग मतलब हिंदी हम बोलते हैं ना सोचना, हम बहुत सोचते हैं, है ना. कुछ लोग बोलते हैं अपने को ओवर थिंकर्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, दे ओवर थिंकिंग को हम लोग अपना फ्यूचर देखते हैं. मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग प्लान बनाते हैं, हाँ ये वाला एग्जाम है तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, मतलब ऐसे पढ़ेंगे, है ना, राइट. तो हम लोग सोच रहे थे. तो आज हम देखेंगे थिंकिंग, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. थिंकिंग क्या होता है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हम लोग थिंकिंग क्यों करते हैं, व्हाई डू वी थिंक अ लॉट, है ना. तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So thinking is a cognitive process in which mental activity that goes on in the brain when a person is organizing and attempting to understand information and communicating information to others. It is organized and goal directed. Thinking is an internal cognitive process which can be inferred from overt behavior. We can say that thinking is a silent speech because thinking is based on concept and words. सो क्या बोल रहे हैं, थिंकिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें मेंटल एक्टिविटी चलती रहती, गोज ऑन इन द ब्रेन, चलता रहता है, एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन. जैसे आप ये पढ़ रहे हो, ये थिंकिंग पढ़ रहे हो, अपना इंफॉर्मेशन सोच रहे हो कि हाँ थिंकिंग ये है. थिंकिंग हम ऐसे मतलब हम सोचते हैं, नो, हम इसका एग्जाम्पल आप लेके अपने दिमाग में आता है, एक मेंटल एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन. ठीक है. So thinking एक internal cognitive process है which can be inferred from overt behavior. So inferred मतलब overt behavior, मतलब एक internal cognitive process है. We can say that thinking is a silent speech because thinking is based on concepts and words. मतलब एक silent speech हम सोचना है, हाँ ये करना है, ओ हाँ ये करना था, हम ये अभी कर लेते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं ना 2 दिन पहले ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, राइट. तो ये हम मतलब एक साइलेंट स्पीच है. So our thoughts process based on mental images, that is mental representations that stand for objects or events that have a picture-like quality. It is basically mental representation of a sensory experience. Concepts are ideas that represent class or category of objects, events or activities. जैसे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, concept ना एक idea that represents the class of or category of objects, events हैं, activities हैं, and mental images क्या हो गया आपके mental representations that stand for objects or events that have a picture like quality. एक picture like मतलब अपना mental image हम लोग अपने दिमाग में ये बैठा करते हैं, हाँ ये फोटो एक basically a mental representation of a sensory experience. Concepts can represent many different levels of objects or events. Concepts can be very general from such fruit called superordinate concept. The concept mango is more specific but can still be a basic level type. And Alfonso mango would be a subordinate. तो क्या बोल रहे हैं, concepts जो होते हैं it can differ है, it can be different from levels or events. So concepts can be very general from such as fruit. जैसे सुपर ऑर्डिनरी, द मैंगो एक स्पेसिफिक है बट बेसिक है, मतलब हम और हमने बस मैंगो बोल दिया. मैंगो भी क्यों, मैंगो के भी तो और टाइप्स होंगे ना, एक स्पेसिफिक मैंगो नहीं बोला. अब यहाँ लिखा है अल्फोंसो मैंगो, है ना, अल्फोंसो हमने स्पेसिफिक बता दी, तो वो सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट हो जाएगा. Concepts can be classified as natural concepts and artificial concepts. Mental images and concepts are building blocks. तो mental images क्या होते हैं, building blocks हैं, and concepts क्या हैं, they're classified into two types, that is natural concepts and artificial concepts. So cognition includes thinking, problem solving, concept formation, and the processing of information to obtain judgments and decisions. Thinking is a problem solving process in which we use ideas or symbols in place of overt activity. It varies from the use of motor, trial and error, those of
mental images and previously programmed rules. The information processing approach is a different way of understanding thinking a related process. This approach looks at the process of thinking in terms of active processing of information by the human brain. It involves various capacities, plus planning, decision making, and solving the problem. The information processing perspective suggests that the cognitive development can be best understood in terms of improvements in basic aspects of information processing. Thinking is involved in the systems of input, central processing, outputs, where these three aspects function as a whole. Language is important in thinking. तो कॉग्निशन क्या है उसमें हम इंक्लूड करते हैं अपना थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है ना इसमें बोलते हैं कि और थिंकिंग क्या है इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज हम प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम अपने आइडिया सोचते हैं सिंबल्स सोचते हैं इन प्लेस ऑफ ओवर एक्टिविटी तो हम दिखा मतलब वी नॉट शोइंग ना इट वेरीज फ्रॉम द यूज ऑफ मोटर ट्रायल एंड एरर दोज ऑफ मेंटल इमेजेस मतलब एक ट्रायल एंड एरर आई एम प्रीवियसली प्रोग्राम्ड रूल्स. The information processing approach is a different way of understanding thinking and related processes. This approach looks at the process theme of thinking in terms of active processing of information by the human brain. It involves various capacities as planning, decision making, and solving the problem. मतलब एक various capacities हैं planning है decision making है solving the problem. The information processing perspective suggests that the cognitive development can be best understood in terms of improvements in basic aspects of information. The information process perspective जो है it suggests that cognitive development can be best understood in terms of improvements in basic aspects. मतलब basic aspects हो जाएंगे of information. Thinking is involved. Thinking is involved in systems of input, central processing, output, where these three aspects function as a whole. So language जो है it is an important part in thinking. So अब हम नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग के बारे में समझेंगे व्हाट इज रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नो रीजनिंग क्या है जजमेंट क्या होता है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग नॉवल सो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी करेंगे थैंक यू गाइस आई विल सी यू सून